हेलो एवरीवन। सो इन द लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था गामा फंक्शन, बेसल फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। ओके, सो हमने तीन फंक्शंस डिस्कस किए थे स्पेशल फंक्शंस में। वो है गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, बेसल फंक्शन, and yes, we had also discussed error and complementary error function. So today we will start with the fifth function, which is Heaviside step function or unit step function. So fifth one is Heaviside's step function or unit step function. So it is defined as ht minus a equal to ut minus a. तो ये दोनों सिंबल्स आप यूज कर सकते हो, ht minus a equal to ut minus a, and it is defined as 0 for t less than a and 1 for t greater than equal to a. Now एक हम स्पेशल केस देखते हैं इसका, फॉर a is equal to 0. अगर a equal to 0 रखे तो ये हो जाएगा ut will be equal to 0 for t less than a, which is 0, and 1 for t greater than equal to a, which is 0. So पहले हम ग्राफ देख लेते हैं. uta माइनस a, ut माइनस a का ग्राफ अगर हम बनाए तो कुछ इस तरह से होगा. This is t, this is ut minus a, this is 1, and consider this to be a. So we have equality on greater than equal to, okay. So for t less than equal to a, sorry, for t less than a, see this a is not included, it is included here. So t less than a, the function is 0, and for t greater than equal to a, the function is 1. So this is the graph. Now for ut, if we see the graph, sorry, for ut where a is equal to 0, so we get the graph as this is t. So now basically a will become 0, so the graph will be this. This is 0 and this is 1. Now an important property regarding function should be noted. The product function ft into ut minus a takes the value, देखिए ft into ut minus a is equal to 0 for t less than a and ft for t greater than equal to a. तो ये एक प्रॉपर्टी है हेविसाइड स्टेप फंक्शन और यूनिट स्टेप फंक्शन की. The property is the product of any function with heaviside step function ut minus a
can be given as 0 for t less than equal to a and ft for t greater than equal to a. Now ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है एप्लीकेशंस में, फॉर एग्जांपल डिवाइस स्विचिंग. तो बेसिकली ut minus a and ht minus a they can be interpreted as device switching on ft. तो बेसिकली डिवाइसेस में या फिर प्रोग्रामिंग में हम यूज़ कर सकते हैं कि जब टी जो कि कोई भी इनपुट हो, अगर ए से कोई ए पॉइंट से कम है तो हमें आउटपुट में ज़ीरो देना है, और अगर टी ए से इक्वल या बड़ा हो तो हमें आउटपुट में एफ टी फंक्शन देना है. सो बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ दिस इज इन डिवाइस स्विचिंग. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. So it can be interpreted as a device switching on function ft, as a device function, as a device switching on ft. Now we come to our next function, which is pulse unit height and duration function. So sixth function is pulse unit height and duration function. Now it is defined as ft is equal to 0 for t greater than capital T. So capital T is basically, you can consider it as a time period, and 1 for t less than capital T greater than 0. ये ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है फंक्शन, तो हम इसे यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे. नाउ सेवेंथ इज sinusoidal pulse. So this function is defined as ft is equal to sin at for t less than pi by a greater than 0 and 0 and 1 and 0 for t greater than pi by a. So ये बेसिकली आप इसका ही एक स्पेशल केस, जो साइनोसोडल पल्स है वो पल्स यूनिट हाइट एंड ड्यूरेशन फंक्शन का एक स्पेशल केस समझ सकते हो, जिसमें बेसिकली कैपिटल टी को पाई बाय ए से रिप्लेस किया गया है, और 0 की जगह पे 0 ही और 1 की जगह पे जो फंक्शन है साइनोसोडल का, दैट इज साइन एटी, वो यूज किया गया है. नाउ एट इज rectangle function. So it is defined as ft is equal to 1 for t less than b greater than a and 0 otherwise. So इसका ग्राफ बेसिकली सिंपल ही है. So this is t and this is ft. ये ए पॉइंट कंसीडर करो, ये बी पॉइंट कंसीडर करें. सो ए से बी तक फंक्शन 1 रहता है, एंड उसके बाद ए से बी में फंक्शन 1 रहता है, और उनके बाहर दैट इज for less than a and for greater than b, the function remains 0. Now we come to 9, that is gate function. Now gate function is defined as FAT. ये सिंबल है उसका FAT.
सबस्क्रिप्ट में a, it is equal to 1 for mod t less than a and 0 for mod t greater than a. So this is ft, this is t. This is the graph of the function minus a to a. So this is 1, this is 0. So mod t less than a, तो आप देख सकते हो ये रीजन में mod t is less than a, and for mod t greater than a, which means in this region the function is 0. Now the 10th function is a Dirac delta function. Dirac delta function. So this we will discuss, this function will be, ये function हम आगे के यूनिट में डिस्कस करेंगे. So यहाँ पर हम बस स्किप कर रहे हैं इसे. Now we come to our next function, which is Signum function. So 11th one is Signum function. So this function, ये function आपने 11th 12th में देखा ही होगा. So the function is defined as SGN, which is signum of t is 1 for t greater than 0 and minus 1 for t less than 0. Now हम इसमें step function, that is unit step function ut और signum function में relation डिस्कस करेंगे. So ut is basically equal to 1 by 2 into 1 plus signum t, where ut is unit step function जो हमने previously डिस्कस किया ही है. Now we come to our 12th function, which is sawtooth wave function. Sawtooth wave function. So इसकी definition है, okay, this is an important function. तो definition है, for a function with time period is equal to a, the sawtooth function is ft is equal to t for t less than equal to a greater than equal to 0 and 0 for t less than equal to 0. So for less than equal to 0, sawtooth function 0 ही रहता है, and f of t plus a is ft. तो बेसिकली ये फंक्शन का टाइम पीरियड अगर देखें तो a है, क्योंकि f of t plus a इंटरवल के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा. तो इसका हम ग्राफ देख लेते हैं. सो ग्राफ विल बी, so this is t and this is the function. Now see, for t less than equal to 0 the function is 0, and for greater than 0 the function will look like now this is a, this is 2a and this is 3a. So you can see that after every interval of a the function is repeating itself and so on. ये function आगे चलता ही रहेगा. Now for इसका एक special case है, for time period is equal to 2 pi it is defined as if time period is equal to 2 pi then ft is equal to t for t less than pi greater than minus pi
and 0 elsewhere. So इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से. This is t, this is ft. This is minus pi, 0, pi. This is minus 2 pi. This is 2 pi, and so on. Now we come to our 13th function, which is triangular wave function. So let me draw a line. So 13 फंक्शन है हमारा ट्राइंगुलर वेव फंक्शन. सो ट्राइंगुलर वेव फंक्शन इज डिफाइंड बाय टाइम पीरियड इसमें होता है 2a, and it is defined as ft is equal to t for t less than a greater than equal to 0 and 2a minus t for t less than 2a greater than equal to a. एंड चूंकि टाइम पीरियड 2a है तो f of t plus 2a is ft. तो इसका ग्राफ हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से. आप देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर वेव की फंक्शन है एंड सो ऑन. एफ टी टी 0, दिस इज एट a, दिस इज 2a, दिस इज 3a, दिस इज 4a, और ये फंक्शन आगे ऐसा चलता ही जाएगा. तो आप देख सकते हो हर 2a इंटरवल के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, देयरफॉर टाइम पीरियड इज 2a. अच्छा, ये आगे के फंक्शंस में जल्दी जल्दी डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दे आर नॉट एज सो मच. सो यू जस्ट नीड टू, आपको सिर्फ उनकी बेसिक डेफिनेशन और ग्राफ पता होना चाहिए. और बीटा गामा फंक्शन जो थे वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया क्योंकि उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं. Now 14th function is half wave rectified sinusoidal function. 14th function is half wave rectified sinusoidal function. So इसमें टाइम पीरियड 2 पाई होता है. टाइम पीरियड is equal to 2 pi. ft is equal to sin t, and this is 0. t less than pi greater than 0, t less than 2 pi greater than 0, greater than pi, and f of t plus 2 pi is equal to ft. So the graph of this function looks like this. This is ft, this is t, this is 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, and so on. Now our 15th function is full wave rectified sinusoidal function. So it is 15th full wave rectified
साइनोसोइडल फंक्शन। तो ये फंक्शन में भी टाइम पीरियड जो होता है, हियर टाइम पीरियड इज पाई। तो एफ टी इज इक्वल टू साइन टी फॉर टी लेस देन पाई ग्रेटर देन 0 एंड माइनस साइन टी फॉर टी लेस देन 2 पाई ग्रेटर देन पाई। एंड चूंकि टाइम पीरियड पाई है, देन एफ टी प्लस पाई इज इक्वल टू एफ टी। अभी इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। दिस इज एफ टी, दिस इज 0 पाई 2 पाई 3 पाई। अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस आर नॉट सेमी सर्कल्स ऑफ रेडियस ऑफ डायमीटर पाई, दिस इज द साइन फंक्शन। और प्रीवियस एग्जांपल में भी जो हमने हाफ वेव रेक्टिफाइड साइनोसॉइडल फंक्शन देखा, उसमें भी सेमी सर्कल्स नहीं है, ये साइन फंक्शन है। नाउ द 16th इज आवर फाइनल फंक्शन। उसके बाद ये स्पेशल फंक्शन वाला चैप्टर खत्म। सो द 16th एंड फाइनल फंक्शन इज स्क्वायर वेव फंक्शन। So here time period is 2a and ft is defined as 1 for t less than a greater than 0 and minus 1 for t greater than a less than 2a. And since time period is 2a, so f of t plus 2a is equal to ft. ये है f of t plus 2a। और ये फंक्शन का ग्राफ अगर देखें तो कुछ ऐसे बनेगा, ft and here there will be t, this is 1, this is minus 1, 0, a, 2a, 3a, a से 2a में minus 1, 2a, so 0 से a में plus 1 फंक्शन, a से 2a में minus 1, 2a से 3a में अगेन टाइम पीरियड 2a हो गया तो फंक्शन रिपीट करेगा अपने आप को। सो 2a से 3a में प्लस 1, 3a से 4a में अगेन माइनस 1 रहेगा एंड सो ऑन। सो here we stop the chapter of special functions, and from next video we will start Laplace transforms. Thank you.